So there's a saying, every expert was once a beginner. Okay, going back, if you could share with us की तुम्ही टेनिस बॉलची जी जर्नी होती ती कधी सुरू केली आणि त्याबद्दलच्या काही खास आठवणी जर असतील तर प्लीज आमच्याबरोबर शेअर करा. First of all, it feels extremely nice to be here, to be amongst the 6 co-owners of the team. Congratulations to the core committee of ISPL. A lot of hard work has gone into putting things together. Selectors are there as well. He's also shared some exciting moments with me. When I have to talk about my childhood days, तो memory बहुत सारे memories है, मगर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत शरारती थे. हर दिन कोई ना कोई कंप्लेंट घर में आती थी. पेरेंट्स यही सोचते थे कि आज क्या कंप्लेंट आएगी. मराठीत बोलायचं तर आज कोणाच्या खिडकीची काच तोडली किंवा गाडीच्या टायरमधनं हवा काढली किंवा काय अशा सगळ्या मस्ती करत असायचो आम्ही रेग्युलर. पण विथ ऑल दॅट वी वर ऑल्सो प्लेइंग ऑल स्पोर्ट्स. So be it hockey, football, cricket, and when it comes to tennis ball, of course, cricket, first thing everyone thinks of is tennis ball, cricket, yes. But along with that, when Wimbledon was on, then we would play hand tennis with a tennis ball. So the idea was to engage ourselves in sporting activities. But if I have to go back to those days, then we would have limited time to play after our school hours. There were few of us who had to go back and attend tuitions also, extra classes. Sometimes I was one of those. Most of the times whenever there was a tuition, मुझे somehow headache होता था. And when I started playing, I would feel better. So वो limited time में all the right-handed batters had to bat left-handed ताकि हम 2 inning खत्म कर सके. So all these rules we used to have. But सभी का एक ही ड्रीम था कि हमारे जो मेरा बड़ा भाई था अजीत, तो अजीत भी एक क्रिकेटर था. Along with him all his friends would play. तो वो एक एस्पिरेशन we would have all of us कि ना बड़ों के ग्रुप में खेलना है. They were like 10-12 years older than us. And बहुत बार तो हम लिटरली बॉल बॉयज़ जैसे ही होते थे कि वो फ़ायदा लेते थे हमारे एज का. वी वुड फील्ड अराउंड इधर उधर, बट वी वुड टेक लॉट ऑफ प्राईड इन दॅट. तर ह्या ह्याच्यात कुठे ना कुठेतरी एक स्वप्न होतं की ना ह्यांच्यामध्ये जाऊन बॅटिंग केली पाहिजे एकदा. बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव की ना दे वर 10-12 years ओल्डर दॅन मी, बट मैं मैनेज कर सकता हूँ. सो after having played few junior level matches, my age group, I was one of the main batters, had scored runs. I got invited to play with my brother's group. और उस दिन जाके मैंने जब बैटिंग की and I came back and joined my friends, naturally थोड़ा कॉलर ऊपर रख के मैं गया था और all that. So I felt कि ना मैं तुम्हारे एक स्टेप आगे हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर जाके इनके साथ खेला हूँ. So they all wanted to follow my footsteps वहाँ पे. But the beauty was कि ना उस समय playing for India and all that never entered our mind because season ball cricket कभी शुरू ही नहीं हुआ था. But cricket की शुरुआत हुई टेनिस बॉल से. तो शुरुआत कहाँ होती है और वो जर्नी कहाँ तक आपको ले जाती है ये किसी को पता नहीं होता है. It's the passion and love for the game which takes you there. And in my life also, I mean, I experienced 24 years of international cricket. It was a beautiful journey, but the start happened with a tennis ball. Absolutely. What a journey that has been. Can we have a round of applause for the way in which he shared that the ambition there at that time was to play in that senior boys group of the elder brother.
and from there 24 years of glory to Indian cricket. सर इसी कॉन्वर्जेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो आपने कहा कि आप टेनिस बॉल से खेलते थे आपके भाई के साथ, पर आप जहां बड़े हुए साहित्य सवास, इट हैज अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर इन द वे द बिल्डिंग्स आर बिल्ट. वेरी मच लाइक दिस, द सोफाज बोथ साइड्स, सामने सिर्फ कैमरा नहीं होते थे, वहाँ पे हमारा मेन गेट हुआ करता था. तो सर ये जो स्ट्रक्चर था, हे जे स्ट्रक्चर होतं साहित्य सवास, हाउ डिड इट हेल्प यू और डिड इट हेल्प यू इन योर big cricket that you played? See, like I said, we would want to play with our, seniors. तो मौका ज़्यादा नहीं मिलता था, but slowly with time, we became a part of their team also, and we started playing proper matches. That मगर दो बिल्डिंग के बीच में जो जगह थी, हमारा पिच था वहाँ पे, which was about 15-20 yards की विड्थ थी उसकी, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डिंग्स थे और सामने मेन गेट. wherever you hit the ball you had to run and score those runs. बट अगर सामने मारते हो तो गेट के बाहर अगर बॉल जाता है तो बाउंड्री मिलती थी, और सीधा ऊपर से गया तो छक्का मिलता था वहाँ. तो वो 6 रन की तो बात, वहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगा. वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे विंडो पेन्स जो थे वो टूटे भी. आई स्टिल रिमेंबर अ फनी इंसिडेंट कि जब भी कांच टूटती थी तो किसी को नहीं पता लगता कि बैट्समैन कौन है, क्योंकि बैट्समैन पहले बैट नीचे रख देता था, तो सभी फील्डर बन जाते थे. एंड एज अ ग्रुप अगर कोई डांटना चाह रहा है व्हाटएवर, तो एज अ ग्रुप वी वुड वो फेस द ब्रांड. मगर एक यूनिटी थी, वो अंडरस्टैंडिंग था कि कोई बोलेगा नहीं, मुंह नहीं खोलेगा कि बैट्समैन कौन था. फिर भी कंप्लेंट्स गए घर में. बट देन एज द टाइम वेंट बाय बहुत सारे चेंजेस हुए. और मुझे अगर मैं कहना चाहूँ कि माझा जो फेवरेट शॉट आहे मराठीत, मी म्हणेन की जो स्ट्रेट ड्राईव्ह बॉलर्स बॅक जातो तो माझा फेवरेट शॉट, त्याची कुठे ना कुठेतरी सुरुवात साहित्य सहवासमध्ये झाली टेनिस बॉल खेळताना. कारण सरळ फील्डर नसायचा, आणि मला ज्यावेळेला शिवाजी पार्कात गेलो, आचरेकर सरांबरोबर प्रॅक्टिस करायला लागलो, त्यावेळेलाही आचरेकर सर मला तेच सांगायचे की फुल फेस दाखव बॅटचा, दॅट इज द सेफेस्ट वे टू प्ले अ बॉल. आणि एक तर फील्डर नसतो समोर कोणी, सगळे फील्डर्स बाकीकडे लावतात, समोर कोण नसतो, तू जर काय फुल फेस दाखवशील तर तुला रन्स मिळत जातील. अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट आय डिड इन साहित्य सहवास, कोइन्सिडेंटली, बिकॉज that was the option where it was the fastest way of scoring runs. So और एक हमने रूल बनाया हुआ था कि खिड़की की कांच टूटती थी तो हमने एक रूल बनाया था कि अगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बॉल लगता है तो द बैटर इज आउट. तो उसमें नीचे से खेलने की आदत हुई, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि 4 रन से पेट नहीं भरता है, 6 रन चाहिए. तो देन वी स्टार्टेड हिटिंग द बॉल एंड इवेंचुअली वी काइंड ऑफ मास्टर्ड how to hit in between those two buildings, and that continued. कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं स्ट्रेट ड्राइव मारता था और मेरा वो फेवरेट शॉट था. तो उसकी शुरुआत हुई साहित्य सहवास से टेनिस बॉल के साथ. Absolutely. Ashish sir, you wanted to add something? I just wanted to ask, जी मी जे विचारणार होतो ते तुम्ही उत्तर दिलं की तुमचा स्ट्रेट ड्राईव्ह हा वर्ल्ड क्लास आहे. सो त्याचं ओरिजिन ह्या गल्लीतून झालं हे तुम्ही आता स्वतः म्हणालात. And you also added that की ॲक्च्युअल फ्रुटफुल पुल किंवा हवेत मारणं याला महत्त्व नाही, तर तुम्ही ड्राईव्हजना ऑटोमॅटिकली टेनिस बॉलमध्ये शिकत गेलात. माझा छोटा क्वेश्चन फनी आहे, तुम्ही काचा तोडल्या असतील आणि काचा तोडल्यानंतर बॅट टाकली असेल, बॅट टाकून पळालाही असाल, पण ज्या वेळेला फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये किंवा इंडियासाठी खेळायला गेल्यावर काचा तुटलेल्या कोणी अंकलने तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन केलंय का? बऱ्याच जणांनंतर येऊन केलं. कारण आधी ज्यावेळेला मी क्रिकेट सुरुवात केली खेळायला, आम्ही साहित्य सहवासमध्ये राहत असल्यामुळे सगळे तिकडे स्कॉलर्स, सगळे साहित्यिक, मोठमोठी पुस्तकं लिहिली होती आणि मोठमोठी नावं तिकडे कॉलनीत. माझे बाबाही प्रोफेसर होते आणि तेही कविता लिहायचे.
तर बाबांना अनेक जण विचारायचे की सचिन काय करतोय, तर बाबा म्हणायचे की क्रिकेट खेळतोय. तुला हा क्रिकेट खेळतोय माहिती आहे, पण अदरवाईज काय करतोय. तर त्यावेळेला मी मी म्हणेन की ना, बाबांचा आणि आईचा भरपूर मोठा हात होता ह्याच्यात, की मला फ्रीडम देणं त्यावेळेला. आणि ही मी 80sची गोष्ट करतोय, पॉसिबली इवन लेट 70sची गोष्ट करतोय. कारण त्यावेळेला आपल्या ह्या लीग्स आणि हा सगळा प्रकार नव्हता. त्यावेळेला अंडरस्टँड करणं की आपल्या मुलाची आवड काय आहे, किंवा त्यावेळेला तर म्हणजे इवन काही टॅलेंट होतं आणि काय नोबडी न्यू. जोपर्यंत माझ्या भावाने तो स्पार्क बघितला तोपर्यंत हे डिस्कशन पण झालं होतं की मी क्रिकेट खेळणार आणि क्रिकेट हे माझं करिअर बनवणार. पण ज्या वेळेला त्या डिरेक्शनला माझं आयुष्य जायला लागलं, त्यावेळेला मला घरनं 100% सपोर्ट मिळाला. आणि कुठेही रन करण्यासाठी प्रेशर असं आईवडिलांनी टाकलं नाही किंवा माझ्या भावाने बहिणीने कोणीही टाकलं नाही. दोघेही मला ऑलवेज, दोन्ही भाऊ माझे ऑलवेज सपोर्ट करायचे. बहीण पण तेच म्हणायची. इनफॅक्ट बहिणीने मला पहिली बॅट पण घेऊन दिली होती मला आयुष्यातली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेला मी बघतो त्यावेळेला मला मी म्हणतो की ना, ती एक जर्नी माझ्यासाठी एक अनबिलिव्हेबल होती. काचाही तुटल्या आणि नंतर त्या माणसांनी मला येऊन कॉंग्रॅच्युलेट पण केलं आहे, मला आशीर्वाद पण दिले. ते भरपूर वयाने मोठे होते आणि त्याने मला नंतर एक चांगली मिठी देऊन पण एक आशीर्वाद दिलेला आहे. पण कुठे ना कुठेतरी नाही नाही नाही, ते ते म्हणजे ती भेट एकदाच देऊ शकतो, परत परत देऊ नाही शकत ती काच सोडणं. पण ते अनेक वेळा घडत गेलं आमच्या आयुष्यात. कुठे ना कुठे त्याच्यात पण मजा होती. Oh, yes, absolutely. What a journey it has been, and the support of the parents and in that era has been so instrumental in that inspiring journey. Sir, आत्ता तुम्ही जेव्हा त्या प्रवासाबद्दल सांगत होतात तेव्हा उल्लेख झाला आचरेकर सरांचा किंवा शिवाजी पार्कचा. So going from साहित्य सहवास to the first step was Shivaji Park. How was that experience and any challenges that you faced, any experience that you would like to share with us, that first step from Sahitya Savas to Shivaji Park? Yeah, because it was a big move for me to change the school. बँड्रा IAS स्कूलमध्ये होतो मी, न्यू इंग्लिश स्कूल. आणि तिकडनं शारदाश्रममध्ये जाणं वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी. आणि ते आचरेकर सरांमुळे झालं. आणि नंतर ऑब्व्हियसली आचरेकर सर माझ्या आईवडिलांशी बोलले, अजितशी बोलले आणि कलेक्टिव्ह डिसिजन वॉज टेकन की मी शारदाश्रमला जाईन. पण तोपर्यंत मी एकटा कधी बसने ट्रॅव्हल करत नव्हतो. तर मला बरेच दिवस माझ्याबरोबर अजित यायचा, माझ्याबरोबर एक मोठी किट बॅग असायची आणि मला अजित घेऊन जायचा, दाखवायचा की 314, 315 ह्या 2 बसेस होत्या ज्या मला शिवाजी पार्कला घेऊन जायच्या. 91 पण असायची जी फास्ट बस होती, ती बरेचसे बस स्टॉप्स मिस करून पुढे जायची पटकन. पण त्यासाठी थोडं पुढे मागे जायला लागायचं. शिवाजी पार्कच्या अगदी बाजूलाच 314 आणि 315चा स्टॉप होता येता जाताना. तर ते मला थोडं ट्रेनिंग मिळालं अजितकडनं. आणि जसा जसा मी एकटा ट्रॅव्हल करायला लागलो आणि प्रॅक्टिस करायला लागलो, बऱ्याचशा गोष्टी घडत गेल्या आयुष्यात. सरांची एक खासियत अशी होती की हमारे जो कोच है वो बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस अरेंज करते थे, क्योंकि उनका बिलीफ था कि हाउएवर मच यू प्रैक्टिस मैचेस में, जब तक आप जाके मैच में बैटिंग नहीं करते तब तक आप मैच टेम्परामेंट डेवलप नहीं करोगे. सो मेरा फर्स्ट मैच था लाइफ का. तो मैंने मेरे सारे साहित्य सहवास के दोस्तों को बुलाया था कि मैच खेल रहा हूँ, आ जाओ. कॉलोनी का मेन बैट्समैन था तो सारे दोस्त आए देखेंगे. और पहले बॉल पे मैं आउट हो गया, तो विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. तो मैंने थोड़े बहाने बनाए. मैंने कहा कि एक्चुअली बॉल लो रह गया. वो सब हमारे गली क्रिकेट में चल जाता था कि बॉल नीचे रहे, क्योंकि पिच थोड़ा अनइवन हुआ करता था. तो वो सब मान गए. अगले मैच को मैंने उन्हें वापस बुलाया. अगले मैच में भी मैं पहले बॉल पे आउट हुआ. तो मैंने वापस कहा कि नहीं, ये बॉल थोड़ा उड़ गया वहाँ से, तो पिच का फॉल्ट था, मेरा फॉल्ट नहीं था. तीसरे मैच में मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, इनको बुलाऊंगा नहीं, उनका भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं जाऊँगा अकेला. और मैंने जाके तभी 1 रन बनाया था. मुझे याद है, आई थिंक अबाउट 5-6 बॉल खेले थे मैंने और 1 रन पे मैं आउट हुआ था.
मगर कहीं ना कहीं खुश था अंदर कि ना एक रन बना के मैं वापस घर जा रहा हूँ शिवाजी पार्क से बैंड्रा को कलानगर को. वो बस जर्नी वॉज अ प्लेजेंट बस जर्नी because I had scored one run. That is when I realized the importance of a single run that is scored. क्योंकि बाद में हमें सब बताते थे कि ना वन रन कैन कॉस्ट यू, आइदर जीत सकते हो या हार सकते हो. मगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि ना जो पहले 2 मैचेस में 0 बना के आता है और देन 1 रन बना के घर जाता है, मेरा मूड बदल दिया था 1 रन ने. Wow, what a story. And see how wonderful the journey has been. Atta जसं सरांनी सांगितलं की it started with 3 innings with the scores reading 0, 0 and 1. And the illustrious career had 100 centuries and 200 test matches. And that's why we say numbers have such a big role to play in the game of cricket. Can we have one big round of applause for these, wonderful stories that we are getting to know from Mr. Sachin Tendulkar. Sir, to take the topic ahead, आपण खूप वेळ बोलू शकतो, पण पुढचा जर आपला एक टॉपिक आत्ता तुम्ही जर सांगितलं की फर्स्ट वॉज द एक्सपोजर टू शिवाजी पार्क. सो फ्रॉम मैदान the next step was going to the stadium. So from Sahitya Savas, you had already come to Shivaji Park. From Shivaji Park, the next step was to a stadium. Any experience, any memory of that first step from going from the Maidans to the stadiums? इट्स अ कोइंसिडेंस, मगर यहाँ ISPL में भी यही हो रहा है. उनके साहित्य सभा से वो मैदान में जा रहे हैं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए और कुछ मैचेस भी खेल रहे हैं और उसके बाद स्टेडियम में जाने वाले हैं. तो मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है. बट जब मैदान में प्रैक्टिस हुई थी एंड आई रिमेंबर कि हमारा अंडर 15 मुंबई के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स थे, तो मैंने बैटिंग अच्छी की थी. 3 दिन हमें आना था, तो पहले दिन मेरी बैटिंग अच्छी हुई, मुझे सिलेक्ट किया गया था सेकंड ट्रायल्स के लिए. सेकंड डे भी बैटिंग बहुत अच्छी हुई. थर्ड डे के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था एंड अगेन आई हैड बैटेड वेल ऑन द थर्ड डे एज वेल. और उसके बाद वो लिस्ट अनाउंस होने वाली थी, वहीं पे उन्होंने बाद में नाम डिक्लेयर करने वाले थे. मगर उसके पहले बिकॉज माई ब्रदर हैड प्लेड, ही न्यू few coaches who were there, and one of the coaches told him कि ना अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दो उसको, बाद में हम कंसिडर करेंगे. when that is for under 15 teams, मैं कितना छोटा हो सकता हूँ, छोटा हो के. बट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, विच वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि 3 दिन में मैंने एक भी बॉल मिडल ना किया हो, ऐसा हुआ नहीं था. तो मैंने मेरे भाई को पूछा कि क्यों, क्या वजह है मुझे सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे बैट के सारे बॉल बल्ले के बीच में लगे थे, तो ऐसा क्यों. तो ही टोल्ड मी कि ना दे फील कि ना यू आर स्टिल स्मॉल, अभी है टाइम. तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा भी था अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी थी. आई टोल्ड हिम कि दिस इज अनफेयर, कि मैं छोटा हूँ, मेरा एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट शुड मैटर. मैं अगर बैटिंग नहीं करता था ठीक, आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट. तो घर वानखेड़े स्टेडियम से घर आते हुए पूरी जर्नी आई वॉज अपसेट एंड आई केप्ट आर्ग्यूइंग विथ हिम. एंड पेशेंटली माई ब्रदर एक्सप्लेन टू मी कि ना दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इनफैक्ट योर जर्नी इज जस्ट बिगिनिंग. ये पहली बार मेरा स्टेडियम का इंट्रोडक्शन था, उसके पहले मैंने स्टेडियम कभी देखा नहीं था. स्टैंड में बैठ के देखा था, मगर वो महसूस नहीं किया था कि अंदर जाके कैसे लगता है स्टेडियम में. इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग फॉर मी. मुझे याद है कि उस दिन हमारा डिस्कशन घर में जाके जो हुआ, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट. माई ब्रदर सेड कि दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी. मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि यहाँ से बहुत सारी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं. एंड देन द फॉलोइंग ईयर आई वॉज काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की उसके बाद, क्योंकि दर्द हुआ था और सारा जो गुस्सा था वो मैंने ग्राउंड पे उतारा, घंटों प्रैक्टिस की,
आचरेकर सर ने मुझे गाइड किया, मेरे भाई ने मुझे गाइड किया, एंड आई बिकेम द हाईएस्ट रन गेटर उस साल जूनियर लेवल पे, बिकॉज माई होप्स वर अलाइव, देयर वॉज अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी. नेक्स्ट ईयर जब मैं वानखेड़े स्टेडियम पे गया तो आई वुड से काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि रन्स बनाए थे, विकेट्स भी लिए थे. सो द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव क्रिकेटर्स हियर कि डिसअपॉइंटमेंट्स आते ही रहेंगे लाइफ में, कि ये नहीं कि एक बार डिसअपॉइंटमेंट आई और वंस यू ओवरकम दैट इसके आगे चैलेंजेस नहीं आने वाले. चैलेंजेस तो रहेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर cricket career, ISPL career, challenges will be there. Embrace those challenges and focus on finding solutions rather than focusing on challenges and problems. Problems don't lead you anywhere. Solutions will lead you to somewhere where you aspire to be. तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई थी, but after that it was a beautiful journey, the best journey of my life. सो यही मैं कहना चाहूँगा सारे प्लेयर्स को जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, सिलेक्ट होते हैं उनको भी यही कहूँगा कि इवन इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज यू गेट रन ओवर. सो आगे बढ़ते रहिए, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं डोंट लूज़ योर होप्स. मुझे भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत टाइम लगा था, मगर हमारी टीम ने कभी होप्स हारे नहीं, and eventually that beautiful trophy was in our hands. तो मैं आपको सभी को all the best कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, and enjoy the game above everything else. This was the grand launch of the Indian Street Premier League by the one and only Master Blaster Sachin Tendulkar. He also shared many interesting anecdotes from his time as a gully cricket player. Listen to it. Is a privilege, and it has come to us from the world champion of India, Bharat Ratna Sachin Tendulkar. Can we have one big round of applause for those wonderful thoughts? Thank you so much, sir, as always, for your thoughts, and I'm sure it's going to inspire a new generation to take it up and go ahead and carry their journey ahead. Then may I request our core committee member, the Honorary Treasurer of the BCCI, Advocate Ashish Shila, sir, to say a few words from here or from the podium, so your choice. My impression was you are my friend. But when you are allowing me to speak after Sachin ji, that means you are trying to take my wicket. No, sir. No, never, sir. But let me wish everybody congratulations, because this ISPL was a mere thought which has come into a reality with the help of everybody. Everybody means this family has grown. The core member may be 4. There are co-owners, which may be 6. There is anchor, those who are maybe 6, but there are 20,000 more, those who are actually going to give a test. They have given the test. Some of them have selected. We wanted everybody should not lose the hopes, as you, Sachin ji, rightly said. और ये जर्नी जो है, ये मैं आप सबको विशेष रूप से टीम ओनर्स को ये कहूँगा कि आप सिर्फ टीम ओनर तो हो, बिजनेस तो है, लेकिन आप सभी एक ट्रांसफॉर्मर भी हो. आप बहुत सारे लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो. आपको 10,000, 5,000, 6,000 जो यूथ फोर्स है, हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो आपकी तरफ एस्पिरेशन से देख रहे हैं. वो आपके टीम में खेलना चाहते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं. उनको आपके थ्रू आइडेंटिटी मिलने वाली है. उनका जीवन, उनके परिवारों का जीवन वहाँ से सफल होने वाला है. और उनको सबको वो ISPL का बैच, जो हमारे सूरज को भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूँगा, अमल भाई, कि उन्होंने एक अच्छा सोच दिया है कि जो सिलेक्ट नहीं हो उसको भी हम हमारे परिवार के सदस्य बना रहे. उनको सचिन जी का भी धन्यवाद देंगे कि सचिन जी हो, हमारे ऋतिक और बाकी सभी लोग हो, उनको कुछ मेमोरी देने वाले, उनको कार्ड बना के देने वाले हैं. ये 20,000 लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है. ये पूरे देश में चलने वाली एक, ये मैं कहूँगा एक तूफान आने वाला है. ये आज एक शुरुआत है. जैसे एक लीग पूरी होगी, ये देश का तूफान बनेगा. आप कल्पना करिए, श्रीनगर में हम खेलने वाले हैं.
हम हैदराबाद में भी खेलने वाले, मुंबई में भी खेलने वाले, हम कलकत्ता में भी खेलने वाले हैं। मुझे, अमोल जी को, सूरज जी को इतने फोन आ रहे हैं। अभी मुझे लगता है सचिन जी, कभी कभी बुरा लगता है कि मुझे वो गोल्डन टिकट दो, राइट वर्ड, कि मुझे उस सिलेक्शन में लाओ। अब वो होप लेके बैठा है, वो कहीं से फोन कर रहा है, हैदराबाद से, और वो अपनी करियर को आइडियल देख रहा है, सचिन को देख रहा है, रवि शास्त्री को देख रहा है, छोटे अक्षय कुमार को भी देख रहा है, उसने भी करियर ऐसे ही बनाया है। तो वो सबको देख के सोच रहा है कि मेरी करियर का जरिया ये ISPL है, मेरे परिवार के आइडेंटिटी का जरिया ISPL है। और जो खेलने वाले उनके सबकी स्टोरीज भी कल इंस्पिरेशनल है। और आज जो इंटरनेशनली खेल रहे हैं, जैसे सचिन जी ने कहा कि मेरा स्ट्रेट ड्राइव, वेयर इट ओरिजिनेट फ्रॉम, स्ट्रीट क्रिकेट, गली क्रिकेट, मैदान क्रिकेट। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे यूथ पावर को चैनलाइज करने का, हमारे रियल टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देने का, और एक ह्यूज प्लेटफॉर्म लाइक अ चीफ मेंटोर और आप ओनर अपने आप में इसको और एक्सपांड करने का। मुझे लगता है लेट्स मेक दिस अ बिग, इट इज गोइंग टू गो बिग, but let's make it an inspirational tufan of India, and I wish you well for the same. Thank you. Absolutely. What wonderful thoughts that let's make this the Tufan of India, and all these team owners are actually the transformers, and this journey can really go ahead where all, not only the team owners, the core committee members themselves are an inspiration, and these wonderful thoughts here while we unveil the names of the team owners. Thank you so much, Ashish sir, for your thoughts. Now may I request the gentlemen to please take their seats. We'll just unveil the names of the team owners, and may I request you to please take the seats there. We'll just unveil it on the big screens, and then we will felicitate. Yes. So if you just take a rewind back. No, if you just do a quick summary of and present a token of appreciation and felicitate all the 6 team co-owners of the ISPL Season 1. Keep the claps going. The first team that we unveiled, and if I could invite the co-owners now of SG Sports, Mr. Sanjay Gupta and Mr. Rohan Gupta, to kindly come up and receive their memento on behalf of SG Sports. May I request the core committee member to jointly present the token of appreciation to Mr. Sanjay Gupta of the SG Sports, that is Team Srinagar. Keep the claps going, ladies and gentlemen, keep the claps going. That's the first team, Team Srinagar, now co-owned by SG Sports at 251 crores, Mr. Sanjay Gupta and Mr. Rohan Gupta. Thank you so much, and best wishes for the league ahead. Next, the second team that we unveiled, owned by Hrithik Roshan, but now co-owned by the KVN Enterprises LLP. May I invite Mr. Venkat Narayan to kindly come up and receive his token of appreciation at the hands of the core committee members. That's Team Bengaluru, KVN Enterprises LLP at 225 crores. Congratulations, sir, and the best wishes for the league ahead. The third team, owned by Amitabh Bachchan, and now as we unveil the co-owners, Path Limited at 205.6 crores. May I invite Mrs. Niti Agarwal to kindly come up. Wonderful. Congratulations and best wishes for the league ahead. So Srinagar, Bengaluru, Mumbai, the fourth team that we unveiled today, the team co-owners, Team Hyderabad, now co-owned by INR Holdings at 200 crores. May I invite Mr. Irfan Razak to kindly come up and receive his token of appreciation on behalf of the co-committee members of the ISPL. The fourth team of Hyderabad, owned now by INR Holdings, Mr. Irfan Razak.
Congratulations, sir, and best wishes for the league ahead. Going ahead, then may I invite the co-owners of Team Chennai. The co-owners now, Mr. Rajdeep Gupta and Mr. Sandeep Gupta, to kindly come up and receive the token of appreciation, and best wishes, both the gentlemen, for the ISPL ahead. Congratulations and best wishes, Mr. Rajdeep and Mr. Sandeep Gupta, for the league ahead. And the sixth team, now co-owned by the AGVPL group at 120 crores. May I invite on the stage Mrs. Aksha Kamboj to kindly come up. That's the sixth team, that is Team Kolkata of the Indian Street Premier League Season 1. Congratulations, ma'am, and best wishes for the first season of the ISPL. Okay, so ladies and gentlemen, that brings us to a close of this wonderful morning. Now that we are in the afternoon, may I request the four gentlemen to kindly pose for one photo opportunity for the archives and for the media, and then we shall close the evening. Just the photo. Yes, yes. Firstly, we'll have with the core committee members and the league commissioner, and then the team co-owners to join them. Yes, if you can have the team co-owners as well to join in. Yes, thank you. And before we wind up, there's one message that we have from one of our core committee members, Mr. Ravi Shastri, that we'll just like to put it up on the board and close the afternoon of this press meet, and also the unveiling of the team co-owners. If you can have that one last message coming in from our core committee, everybody present here. Thank you so much and see you soon. Thank you.